Followed in this case, last date of hearing. जी सर, सक्सेना जी। 24. जी सक्सेना जी, Your Lordship. व्हाट इज द मैटर अबाउट? My Lord, in this case, on the. अरे सक्सेना जी से पूछ My Lord, in this case, the order of additional commissioner has been challenged on the ground herein that on basis of the will mutation was granted by the Tehsildar. This order was affirmed by the sub-divisional officer as well as the additional commissioner. Hello, my humble submission is that in this case, all the authorities, Tehsildar, sub-divisional officer, and the additional commissioner has considered another aspect while passing the order that the private respondent, contested respondent herein are also nearest year of the deceased. They are also entitled to get mutation on. सर मेरा कहना ये है कि विल हटा के आपको जो भी शेयर मिलता मिलने दीजिए, वही तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then my lord, kindly have a look. विल से आप दूसरे का शेयर नहीं छीन पाएंगे बस। Your Lordship, my humble request is that the bill of year 1994, thereafter the mutation application was preferred in year 2014, and year to amendment. The Tehsildar, kindly have a look, Your Lordship. The order of Tehsildar. My learned friend has filed. That is by page number 36. जी सर। Page number 36 may kindly be seen. The Tehsildar चूंकि लास्ट 4 लाइन पेज नंबर 37 में पढ़ रहा हूं, चूंकि खातेदार मनुआ ला औलाद पोत है, इसलिए आवेदक आवेदित भूमि खतरा नंबर 100 के संबंध में प्रत्यक्ष नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करे। सर ला औलाद अगर वो फौत हो गया है वो एक्चुअली सर तो वो क्लास 2 हेयर भी तो आ जाएंगे। उसके सगे भाई के लड़के हैं, हमें नहीं मालूम ना, तो क्लास 2 हेयर आ जाएंगे। क्लास 2। अब इसके बाद तो एसडीओ साहब ने कंसीडर किया। अच्छी बात है सर। अभी अपन देना जरा हिंदू सक्सेशन एक्ट, आप इसके मनुआ के क्या लगते हैं? जी सर, मनुआ का एक भाई था छल्ला। एक मिनट, मनुआ भाई था छल्ला। जी छल्ला, राइट सर। जी सर। मनुआ के सगे भतीजे बटिया के हम पुत्र हैं। भतीजे के आप पुत्र हैं? जी। तो आपका छल्ला आपके दादाजी हुए क्या? बटिया क्योंकि सर हिरिया जो था वो जिसके पास जो ओरिजिनल लिटिगेंट था वो उसके खत्म होने के, उसके एक्सपायर होने के बाद एल आर्ट्स के रूप में रिकॉर्ड पे आए हैं। कोई बात नहीं। रिस्पोंडेंट तो हरिया मनुआ का ला औलाद थे, तो उनकी पत्नी कहाँ थी सर? उनकी पत्नी सर जो मेरे मित्र ने सर पंचनामा फाइल किया है उसमें पेज नंबर 31 देखें। मनुआ इसका था, भाई था झल्ला बनाया है इन्होंने। एक सेकंड, मनुआ का था एक झल्ला और फिरुआ। जी अच्छी बात है। आप इसके अब मैं झल्ला मैं सर झल्ला के पुत्र था हरिया जो ओरिजिनल एप्लीकेंट थे। और हरिया के बाद हरिया के बाद एप्लीकेंट हियर इन मेरे भाई मनुआ की प्रॉपर्टी थी जी। उसके 2 भाई थे झल्ला और फिरुआ। चूंकि मनुआ लॉ औलाद खत्म हो गया था जी, तो झल्ला और फिरुआ के पास प्रॉपर्टी जाएगी जी, है ना जी। अब झल्ला और फिरुआ के दोनों को 50-50% मिलेगी जी। अब फिर झल्ला खत्म हो गए तो उसके इलाज को उस 50% में से मिलेगा और फिरुआ के इलाज को 50% में से मिलेगा। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रामदास जी। रामदास जी हरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि हरिया के पास 50% का सिर्फ 1/4 हिस्सा था जी। और हरिया के 1/4 हिस्से में
उसका भी 1/4 हिस्सा आपके पास आ रहा है रामदास के पास। जी मालूम। फिर मतलब काइंडली तो आप तो विल से तो सारे ही ले बैठे। आप काइंडली सीधा ऑर्डर ऑफ द तहसीलदार, वो सब डिविजन हाँ ऑफिसर, हाँ। सब डिविजन ऑफिसर ने इसको सर मैं कंसीडर किया है पेज नंबर 27 में। मैं सब मैं पढ़ दूं। हम्म। मेरे द्वारा प्रकरण का आद्योपांत अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के अपील ज्ञापन में आक्षेपित मुद्दों का परिशीलन किया गया। उभय पक्षों के द्वारा पक्षकार को विचार किया गया। उपरोक्त विवेचना के अनुसार पर स्वर्गीय मनुआ कुर्मी लावल फोत है, अन्य वारिस झल्ला फोत हो चुका है और फिर वह भी फोत है। झल्ला कुर्मी के 3 वारिस पटिया पुत्र मौजूद, हरिया फोत और रमुआ फोत है। फिरुआ फोत के एकमात्र वारिस खुमनी पुत्री मौजूद है। वसीयतकर्ता मनुआ के द्वारा उसके स्वर्ण ये के कोई पुत्र हुआ। जानकी कौन है सर? न्यूलॉर्ड से। जानकी कौन है रिस्पोंडेंट? आप रिस्पोंडेंट के लिए ना? जी। ये जानकी कौन जानकी बटिया का पुत्र है। है? बटिया कर्मी का पुत्र है। बटिया? जी। बटिया? झल्ला कुर्मी के पुत्र बटिया है। सल्लू, हरिया, रमू और बटिया। जी। बटिया का पुत्र पुत्र है जानकी। जानकी बटिया का पुत्र कैसे हो जी। सकता है? पुत्र है क्या वो? जानकी शनो बटिया। हाँ। आप जानकी रोशन बटिया। बटिया पिता है और जो पुत्र हैं जानकी रोशन। हाँ। रमुआ, रमुआ और बटिया, ये 2 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिस्पोंडेंट्स को। एक बटिया हो गया और एक रमुआ हो गया। तो झलुआ के 2 बच्चे लड़ रहे हैं झल्ला के तीसरे बच्चे के अलावा से, है ना? पिटिशनर्स कौन है? हरिया के हैं ना? हरिया के रामदास और बन्ना। हाँ। तो यहाँ पर तो भाई साहब ये तो फिरुआ को तो गायब ही कर दिया। फिरुआ को तो गायब ही कर दिया। फिरुआ को कहाँ जाएगा शेयर उसका सर? (8964/2024). This petition under Article 227 of 226 of Constitution of India has been filed, seeking the following relief. It is submitted by counsel for petitioner that Manua was the owner of the property in dispute. He was survived by his 2 brothers, Jhalla and Firua. Full stop. So Jhalla was survived by 3 children, namely, ये क्या है? कल्लू है कि सल्लू है? सल्लू ब्रैकेट में विडो, सीधा बाई मालूम। हरिया son, Ramua son, Bhatia son. The petitioners represent the family tree of Hariya, whereas the respondents are Bhatia and are the family tree of Bhatia and Ramua. It is submitted that after the death of Manua, the respondents moved an application for mutation of their name on the basis of a so-called will executed by Jhalla in their favor, and accordingly the Tehsildar, by order dated 31/7/2014, allowed the said application. 31/7/2014 passed in revenue case number 87/8-6/2013-14, allowed the said application and directed for mutation of names of Roshan and Janki, both sons of Bhatia Patel, and directed for mutation in respect of 6.058 hectares of Khasra number as mentioned in the said order. Being agreed by the said order, the petitioner preferred an appeal. Hariya preferred an appeal, which was dismissed. SDO का order कौन सा है? Which was dismissed by SDO, Rajnagar District, Chhatarpur, by order dated 21/2023, passed in revenue case number 21/appeal/22-23. And
The mutation of names of the respondents on the basis of will was affirmed. Being agreed by the said order, the petitioners, who are the legal representatives of area who died during the pendency of appeal, again preferred an appeal before Additional Commissioner Sagar Division Sagar, who by order dated 11/12/2023 passed in case number 906/appeal/2022-2023 dismissed the appeal, and thus the mutation of names of respondents on the basis of so-called will executed by Mundwa have been affirmed. Challenging the orders passed by the revenue courts below, it is submitted by counsel for petitioner that it is well established principle of law that the revenue courts have no jurisdiction to adjudicate the correctness or genuineness of a will, and if a beneficiary of a will wants to take advantage of the same, then he has to seek a declaration from the civil court of competent jurisdiction. Our contract is submitted by counsel for the respondents so that even if the will is ignored from a still, the respondents would be entitled for their share in the property left by Munwa. It is further submitted that the revenue courts have considered the correctness and genuineness of the will in proper perspective. Heard the learned counsel for the parties. According to the petitioner, the family tree reads as under. ये पेज 31 पे फैमिली ट्री है, आप उसको ले लीजिएगा. In the aforesaid family tree, which has been filed as Annexure P5, the details of legal representatives of Bhatia have not been mentioned, but the claim of the respondents number 1 and 2 has not been denied, has not full stop. However, it is clear that Bhatia is still alive, and therefore, therefore, in accordance with the provisions of Hindu Succession Act, the respondents number 1 and 2 would not get any share in the property during the lifetime of his father, be that whatever it may be. So far as the question as to whether the revenue authorities can adjudicate the correctness of the will or not is concerned, the same is no more res integra, the Supreme Court in the case of Jitendra Sharma, this court in the case of Anand Kumar Jain. Thus, if it is clear that although the name of a person can be mutated in the revenue records on the basis of will, but since the revenue records are not the document of title, therefore, unless and until the will is declared to be genuine and properly executed by the testator, no one would get title on the basis of said will. Under these circumstances, this court is of considered opinion that the revenue authority should not have taken up the task of adjudicating the correctness of the will and should have directed the propounder of the will to seek declaration from the civil court of competent jurisdiction. Thus, the orders dated so and so passed by Tehsildar, SDO, and additional commissioners suffers from inherent lack of jurisdiction, and thus they are hereby quashed. So far as the contention, accordingly, liberty is granted to the by propounder of the will to seek a declaration from the civil court of competent jurisdiction with regard to the correctness of the will. It is made clear that the mutation shall be subject to the final outcome of the civil litigation. In the meanwhile, the legal heirs of Munwa, bracket mein whether class 1 or class 2, shall be recorded in the revenue records, and the property shall end. The parties may approach the civil court for grant of temporary injunction. With the force, it is made clear that if a civil suit is filed, then the trial court shall decide the civil suit strictly in accordance with evidence which would come on record and shall not get swayed away by any of the findings recorded by any of the revenue authorities. With the aforesaid observation, the petition is allowed.